अज्ञान एक आवश्यक यद्यपि एक गौण तत्व है। कहाँ है? कौन से पेज? 6 पेज। पेज नंबर 6 कौन? अज्ञान एक आवश्यक यद्यपि एक गौण तत्व है। हाँ, यहाँ जिससे वैश्व ज्ञान ने तुमको आरोपित कर दिया है ताकि वह कार्य संभव हो सके जो कि बड़ी भूल या पतन नहीं है, बिल्कुल सदृश अवतरण है, कोई अभिशाप नहीं कर मुझे अब कोई बताना चाहिए इनके बारे में? अब आप कोई इसमें बोलना चाहिए तो पहले बताइए, ज्ञान और ज्ञान का जो है हमारा क्या अप्रोच है हमारे वेद वेदांत में भी हाँ जी, कोई बोलना चाह रहे हैं इस बारे में? इसमें जो ज्ञान श्री अरविंद ने कहा है कि ज्ञान ही ज्ञान की सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम अज्ञान में नहीं होंगे हम ज्ञान करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो साथ तो इसका यही है कि अज्ञान को एक अवसर है पाने का, क्योंकि उसी के द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब अज्ञान में होंगे तभी तो ज्ञान बनाने की कोशिश करें। और कोई बात है क्या? हाँ, श्री अरविंद के पूर्ण योग में एक सिंथेसिस ऑफ योग में एक मंत्र है कि ऑल लाइफ इज योगा। हाँ, उसमें ज्ञान अज्ञान सीमा असीमा प्रकाश अंधकार सब कुछ समान है। और हाल ही में मैंने 2 लाइनें लिखी है दिशा नमन का ही। उसमें एक बात आती है कि भोर के उजाले पर सुबह के पहले नमस्कार पर उगते सूरज का नहीं योग की रात का है, वह रात जो तैयार करती है, जो पिरोती है भोर की बांसुरी पर उजाले का नहीं। तो निशांस या निश्चेतन का जो प्रकाश की यात्रा की पूर्व पीठिका है, भूमिका है। और ज्ञान और अज्ञान को दोनों को इंटीग्रेटेड फॉर्मा में रखा गया है। इसका मतलब स्पेशल फोकस किया गया है। हो सकता है कि ज्ञान या अज्ञान जो आज लग रहा है वो कल परिवर्तित होकर प्रकाश का रूप बन जाए। इस सेंस में शायद ये, और मूल में उसके मूल में वही बात है कि अगर हम जीवन को समग्रता से देखते हैं तो हम अज्ञान को कम से कम घृणा से तो नहीं देख सकते या उसको लिमिट नहीं देख सकते। ज्ञान की ही पूर्वपीठिका, ज्ञान की भूमिका हम बहुत अच्छा भाई साहब एक लाइन सावित्री में कि absolute supernal darkness sometimes falls on mankind when he is very near to light, ऐसा कुछ है। प्रश्न है कि कई आयाम पे कर सकते। सबसे पहले जो हाईएस्ट आयाम पे इसको तो प्रैक्टिकल में तो काफी पता ही है, आप बच्चे को वही पढ़ा रहे हो, कुछ दो दबाव एक मिस्टेक भी मिलना बनता है तो कभी गणित है आकर जो गलती नहीं कर सकते तो गणित सीखना है बिकॉज इज ओनली वो। तो ये सब चीजें जो है ये तो एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है। इसका वाइडेस्ट फ्रेमवर्क क्या है? सिविल की कम्युनिटी है इस ऑफिस, उसमें दो लोग होते थे, विज्ञान एंड दो शब्द। विद्या is to see the divine unity every day. When you see the unity, that is it. When you see the differentiation, when you see the ego, that is it. हमारे जो एस्थेटिक
ट्रेडिशन है, उसमें ये है कि अविद्या से विद्या में वो बेस्ट है। परमात्मा के अलावा परमात्मा जब कुछ है तो सब जंजाल है, बेकार है, सब दिख रहा है। ये तो डिवीजन है, ये एविडेंस है कि नथिंग है, और इसमें काफी सब ईसा उपनिषद जो कहता है, वो कहता है those who go into avidya fall into darkness. Those who pursue after vidya go towards light. But those who pursue vidya exclusively fall into greater darkness. That you pursue avidya is darkness, but to pursue avidya is darkness, but to pursue vidya exclusively is a greater darkness. इसका क्या है? देखिए, उनके पीछे साइकोलॉजिकल ये रिलेटिव चीज है कि भाई हमारे सेंसेशंस हैं, वो अपीयरेंसेस सी थिंग्स, ये तो आप लोगों को सारा सबने पढ़ाई होगा मेरे ख्याल में, सांख्य शास्त्र का जो है, हमारे सांख्य शास्त्र का विवेचन जो है, उसमें लिखा है कि the way they have enumerated how the universe come into being is done perfectly by Sankhya Shastra. No shades of opinion. There are other conclusions you can question, but their enumeration part, which is called Sankhya, is accepted by all shades of Indian philosophy. Nobody questions that. You say this enumeration, that enumeration is so far advanced of any science. The foreseeable future of science will never come. वो जो है उसमें सारा इन्यूमरेशन है। आई विल कम बैक टू दैट। अब क्या है कि व्हाई देयर इज डार्कनेस इन अविद्या? बिकॉज ऑफ द वे द यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड, द वे यू इनडायरेक्टली रिसीव द रिपोर्ट थ्रू योर सेंसेस, यू सी, व्हिच रिपोर्ट टू द मानस. Manas does the process, actually seeing an organ is only manas, these are only conveniences. And then it reports to buddhi, and on that basis you analyze things and see. तो आपको ये डाइवर्सिटी दिखेगी, ये सारा सब कुछ इम्पोज नो तो बन जाएगी. So this is a lower appearance. Deeper appearances when you see the divine unity itself appear. When you see the self appear, that is a different. So this is regarded to Vidya. Vidya is to see the divine appear. Now none of them have, no matter what you see and how you imagine, your highest philosophy, your highest experience, your supreme experience are not binding on the supreme being. If you take them exclusively, you immediately fall away from the spirit of Veda. Veda की spirit क्या है? Why Veda is perennial? Why it survived? Because the highest experience is just simply reported for one day. Then another experience is reported for a day. None of them have, even the supreme experience has the monopoly. They never say. So when you see the unity, this is also an aspect of it. A greater aspect. Because the way it comes to that is why it is a greater aspect. That is another aspect. So when you exclusively pursue this, you become blind to all the rich manifestation of the divine in direction of everything. And Mataji jo कहती है, if you are an ascetic following this, usually you end up living into your uncharted private worlds, from which you never come out. You get imprisoned into one of the things. And then, because Isha Upanishad is an Upanishad,
which is the basis of the founding of divine life. So even though divine he wrote later on, or earlier he only wrote a commentary, life divine commentary on these opposites. Later on when he got why men about the reasons and what he wrote it on. So this is so that is why he is saying basically, if you take any aspect and take it for the whole, you are going to find it. इसलिए वटुकाल विद्या वटुकाल विद्या are relative terms. They can hardly limit the divine. Your vidya will be seen as, your highest knowledge will be seen as ignorance. Little bit later. आपका supramental में omnipotence, omniscience and omnipresence. It's even though, say, if you go into another plane, and if you talk there about omnipotence or omniscience, people will think the person is not observed, not educated yet. What is he talking about? What is the unit of these things? It is complete ananda of the divine. Where is the question of omnipotence and omniscience? There is nothing else. So what is omnipotence? Omnipotence means there is something else about which I have complete power. There is no such sense. What is omniscience? I am myself. There is no question of this. So on that plane, what the supramental regards the greatest things will seem like things not very important, not very concerned. So you see, we have to understand the relativity of all our approaches, however great or sublime we be. So it is in this sense, one way we can look at it, if you make this dichotomy, this is knowledge, this is ignorance, so this we believe, this we take, that will be a false. Philosophically it is not right. Psychologically, practically, in practical life, you see, it is progressively through error, you come to knowledge. Through error, you discover the right way of doing things. And then when you will find out it is a relative thing, what you call is the right thing now, very soon you will find out that it is not so. The guards which help you to ascend, help you to a point. After that, they become liabilities. They don't want you to go any further. So you have to write about it. So this is because of raised to Indra, Varun, with all of them engaged, and then says, Kali, deliver me from all these gods. Because ultimately, it is not a question of good or bad. Where you are in the journey, you will be progressively moving towards. So this is a relative term. What is ignorance now? What is knowledge to you now? Will be ignorance. You don't have. So, you see, when you are going with the journey, आप लोग करेंगे तो ये तो कोई खास बात नहीं. वो वहाँ बोला, but you must have walked through this. आप यहाँ से उधर जा रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन ऑफ that being bad or that being good का सवाल नहीं. For me, it is to go from this to this. I have to walk towards this side, not towards this. तो इसको कोई अच्छे बुरे के सेंस में लेना. It is a utilitarian concept. And error and these things, because man's mind is not capable of choosing. देखिए हमारी choice के लिए when you are journey, when you are going somewhere, you have to choose. अब आपको कहीं जाना तो आपने कहा कि right turn करना है. This does not mean कि that turn it is सड़क को उसको खराब है. It is not for you. But it has nothing to do with good or bad. Other people who are going to go there, they may find it very useful. What is to you ignorance may be a great knowledge for somebody, and what is knowledge to you may be ignorance for somebody else. See, the relative cheap है, गुणन करके सवाल नहीं. Because man is so, consciousness is so frozen, so limited. But from this you are going from a finite to infinite, from the temporal to the eternal. So on the process, obviously, the process has to be gradual. It is a gradual thing. Sometimes when somebody seems to have progressed, then our Indian philosophy will explain that he must have achieved that. It is a fast gathering of all the past prarabdhas. वो सब आपने अचीव कर दिया, उसकी फास्ट गैदरिंग है, इसलिए आपको लगता है कि इसमें मेरा कॉम्पिटेंट है. बट ये भी स्टडी जो आदमी ने पहले 10 साल गणित सीखी है, वो स्टार्ट करते नहीं इमीडिएटली कभी एक्शन. Basically, approach to the divine has to be progressive. Man has limitations of all kinds of limitations and tremendous amount of subconscious which mechanically drives us. So आप देखिए how we approach it. Accept your imperfections, misunderstandings,
understanding, no ignorance. We move towards greater and greater. When you arrive at something, it seems like such a great thing. Hindu said that when he had the experience of overmind, he thought this is true and complete illusion. In synthesis of yoga, this confusion still persists. Because at that time, I had not experienced Superman. So I thought, how can anything be greater than this? But I realized when I brought it down to the physical, I found that it failed. Then I could distinguish between supermind and overmind. So इसलिए when a person understands something, तो वो कहता है बस ये final knowledge आ गया. This is our human, हमारा स्वभाव. इससे आपको बचना पड़ेगा. जितना ज़्यादा आप प्लास्टिक हो, नॉलेज आई ठीक है, नॉलेज इज समथिंग सर्विस है, बेसिकली. ये तो सारी नॉलेज, रिलेटिव नॉलेज सब सर्विस है. ब्रह्म ज्ञान है, वो as long as it is reflected in the human mind, वो पार्शियल है. शुरू में कहा शंकराचार्य का भी कहना बहुत सही है, रामानुज का भी सही है, महात्माचार्य का भी सही है. They are only reflecting one side of the thing. Integral experience with their art perfectly. करेक्ट साइड गीता सारे को इंटीग्रेट करती है. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सारा कोर्स जो है, but however great you may find your discovery, however ultimate you will see, it is a very relative. You will find it very relative and often limited potential, and doesn't apply to everyone. Each has its own way of self-discovery. ये knowledge and ignorance की बात है. तो हमारे perceptions हैं, बिल्कुल perceptions हैं. Error, the truth is कि हम perceive नहीं कर सकते. हमारे sense नहीं कर सकते.